उम्मीद है आप लोगों ने जो वीकेंड पे हमने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी वो रिजल्ट अब तक अब्सॉर्ब कर लिया होगा। एंड दिस मैच कुड नॉट हैव कम अर्लियर फॉर अस। हालात ऑलरेडी क्लब के काफ़ी नाजुक सूरत हाल जो है वो है। और वी आर बैक इन द चैंपियंस लीग। यस, चैंपियंस लीग के लिए तो टीम बनी है यार, आपको नहीं पता? So we are playing FC Bayern Munich in the famous Allianz Arena in Munich, Germany. और टीम जो है वो ट्रेवल मेरा ख्याल है कर गई है। कैरिंगटन में आज ट्रेनिंग सेशन था। बहुत सारे हमें चेहरे नजर आए नए जो कि वापस आ रहे हैं इंजरीज से, जिनमें प्रोमिनेंट जो हैं वो वरान और माउंट थे, जिन्होंने ग्रुप ट्रेनिंग्स का हिस्सा बने वो, बट दे हैव नॉट traveled to Munich with the squad, so they will not be a part of this match. Other than that, Kobe Maino ने भी ट्रेन किया है और अमराबाद ने भी ट्रेन किया है, बट नॉट विद द ग्रुप, ओनली अलोन। तो चेहरे वापस आ रहे हैं ऐसा ऐसा टीम में। कुछ थोड़ा बूस्ट शायद मिले वीकेंड पे। आई थिंक वी विल सी वेरान एंड माउंट बैक इन द स्टार्टिंग 11, बट द स्क्वाड दैट हैज ट्रेवल्ड टू म्यूनिक उसमें हमारे पास ऑलमोस्ट सारा वही स्क्वाड है जो कि हमने वीकेंड पे ब्राइटन के अगेंस्ट देखा। नॉट सो गुड, आई नो। बहुत सारा, आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज मैं आपको देना भूल गया कि हैरी मैगवायर भी इंजर्ड हो गए, तो वो भी पार्ट ऑफ स्क्वाड नहीं होंगे, पार्ट ऑफ बायर्न म्यूनिक मैच नहीं होंगे। उसके अलावा एरन वैन बिसाका इज एन लेटेस्ट एडिशन टू द इंजरी लिस्ट, एंड ही इज आउट एज वेल। वेरी 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 डिसअपॉइंटिंग और बहुत ही बुरे हालात हैं जिसमें हम म्यूनिक जा रहे हैं, जो कि एक 34 मैचेस की उनकी स्ट्रीक बनी हुई है ग्रुप स्टेजेस की, जो चैंपियंस लीग में वो अनबीटन है, जिसमें से वो 31 जीते हैं और 3 उनके ड्रॉ हुए हैं। एंड फॉर द लास्ट 40 मैचेस दे हैव स्कोर्ड इन ऑल द मैचेस इन द ग्रुप स्टेजेस। तो हालात तो बहुत नाजुक है क्योंकि म्यूनिक का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और हमारी अवे फॉर्म पिछले 10 अवे मैचेस में से इन ऑल कंपटीशन हमने सिर्फ 3 जीती। तो इससे आप अंदाजा लगा लें हमने अवे फॉर्म हमारी कितनी बुरी है। द विन परसेंटेज जो एरिक टेन हैग की थी 72-73%, it has come down to around 51-52%, और वो इसीलिए because we have had our worst start in the league in the last 33 years। और अब चैंपियंस लीग भी आ गई है। आई थिंक वी आर नॉट स्टिल रेडी फॉर द चैंपियंस लीग, वी आर नॉट रेडी फॉर एनी मैच। आई थिंक स्क्वाड इज वेरी डिप्लीटेड और जो लोग खेल रहे हैं वो भी अपना उस तरह से प्रॉपर पूरी 100% नहीं दे रहे। कुछ मे बी टैक्टिक्स भी मिसिंग है। तो इस पे हम थोड़ा नजर डालेंगे इस मैच में जो कि बायर्न म्यूनिख के साथ है। हेड टू हेड अगर देखा जाए तो बहुत बुरे हालात हैं। हमने बार्सिलोना के अगेंस्ट 5 मैचेस हारे हैं चैंपियंस लीग में और उससे कम हमने सिर्फ बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट हारे हैं। आउट ऑफ द 11 मीटिंग्स वी हैव वन ओनली 2 अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख, उसमें से एक फेमस ऑफ कोर्स चैंपियंस लीग फाइनल था 1999 का, न्यू कैंप। Of course, that is one of the famous Manchester United victories, the comeback win। और but उसके बाद से बायर्न म्यूनिक हैज बीन ऑल ओवर अस। 2010 में लास्ट मैच जो हमारा हुआ वो 2013-14 सीजन में हुआ बायर्न म्यूनिक के साथ, इन विच पैट्रिस एवरा स्कोर्ड वर्ल्डी एट एलियंस अरीना, और वो देख के दिल खुश हो गया था। And we thought that we could do something, we could snatch something from Bayern Munich, but no, it was David Moyes against Pep Guardiola. What else you could expect from that match? The outcome was clearly visible. So वो मैच हम हार गए 3-1, and overall I think it was 1-1 at Old Trafford, in which Bastian Schweinsteiger also scored, and I think Vidic scored from our side। So that was a 1-1 draw और फिर हम overall aggregate पे हम हार गए थे। But that was the last time we played Bayern Munich। और उसके बाद से हम चैंपियंस लीग में भी आते जाते रहे हैं, ज्यादातर हम यूरोपा लीग में आपको नजर आए हैं। एंड दैट एक्चुअली सम्स अप आवर लास्ट नो जब से फर्गी गया है 10-12 years
जब से फर्गी गया, that sums it up. It has not been consistent. We have not been consistent enough to play European football, top tier European football, I would say. Uh, so that is all about Manchester United. Now we are back in the Champions League. You have to show that you are among the top clubs and you are here for a reason. You can show the fans, you can show the club supporters that have trusted you. You have, and the players, I think they need to perform anyway. और अब tactics किस तरह हम बायर्न म्यूनिख को फेस करते हैं, दे हैव रियली फिट स्क्वाड. उनका सिर्फ गोली मैनुअल नॉयर और मेरे ख्याल है कोमैन शायद इंजर्ड है. अदर देन दैट दे हैव अ वेरी फिट टीम. और अब हैरी केन उन्होंने साइन कर लिया. आई थिंक दैट वाज द मिसिंग पीस इन द पजल. They already have Thomas Tuchel. He has a really good record in the in European competitions as well. He has already won Champions League for Chelsea in his short tenure. So everything I think is in Bayern favor. हैरी केन को देखा जाए तो लास्ट 10 अपीयरेंसेस में उसके अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड उसके 4 गोल हैं, 3 असिस्ट हैं, 7 गोल कंट्रीब्यूशन है उसकी. लेकिन मजे की बात ये कि इन 10 मैचेस में से वो एक दफा भी वो विनिंग साइड में नहीं रहा. तो आई डोंट नो, मे बी इट्स द फर्स्ट टाइम, बट आई होप इट्स नॉट. The odds are all against us, but I think this is the time for Manchester United to prove that you got something. You have got something, and you can challenge Bayern Munich in this group. Because I think we might beat the other two teams, Galatasaray and Copenhagen. It's Bayern Munich जिसके against हमें जो है ना वो at least Allianz Arena में 1 point is sufficient, I think. Um, अभी तो मैं मतलब जिस तरह की हमारी फॉर्म जा रही है, आई थिंक 1 point विल बी अ विन फॉर अस as far as United is concerned. The injury crisis and the form. So I'd go with a 1-1 draw from this. बाकी अगर lineups को देखा जाए तो I think how do we start with this Bayern Munich side. तो वो एक बहुत ज्यादा जैसे हमने वीकेंड पे देखा. I think we started with with a diamond. It was a surprise for Brighton, but it didn't take long for De Zerbi to understand that the formation and everything. और 20 मिनट्स के बाद उसने टैक्टिक्स चेंज करके हमें फिर वो नचाया, ब्राइटन ने वो नचाया कि बस टूचल जो है वो टच लाइन पे नहीं होगा. आई थिंक इज सर्विंग अ बैन. सो that is maybe a good news, but Bayern Munich पूरी की पूरी होगी. They already have so much talent. Sane, Kane, the front, the Gnarby, Kimmich. No, there are a lot of talent. I don't have to explain their whole team, but for us, I think we should go with a double pivot and not with a 4-3-3, but with the double pivot and a bit defensive approach. So अब एरन वैन बिसाका भी चला गया तो डालो खेलेगा राइट हैंड साइड पे. Reguilon will play on the left hand side. Varane is still not traveling, so of course Lindelof and Licha Martinez. Martinez needs to improve. I think his game is nowhere near the Martinez we saw last season. So maybe this is the match he needs finally to pick up his form, lost form, I'd say. Uh, then we should have a double pivot. Amrabat is not available. So along with Casemiro, who has been, he has been a disastrous start for him in this season as well. उसको भी अपनी चैंपियंस लीग वाली जो 5 चैंपियंस लीग आपने जीती हैं, यू नीड टू शो दैट व्हाट यू आर मेड अप ऑफ. तो उसके साथ उसका डबल पिवट हमें खिलाना पड़ेगा, नॉट एरिक्सन. I don't think so. This game is made for Eriksen because of the tracking back. वो हमने ब्राइटन के अगेंस्ट भी देखा. Slow tracking back and you give all the space to the opponents to score against you. So maybe we play McTominay along with Casemiro in that double pivot. और उसके बाद हमारे पास 4-2-3-1 में हमारे पास नॉर्मली जो है वो हॉलैंड आ जाएगा आगे, रैशफोर्ड ऑन द लेफ्ट and Bruno as a CAM.
और राइट पे आई थिंक गार्नाचो और पेलिस्ट्री नीड्स टू स्टार्ट दिस गेम. वी सॉ ऑन द वीकेंड दे डिडंट स्टार्ट, और मेरा ख्याल है वो जैसे ही आए वो बहुत लेट आए, बट वो आए तो थोड़ा सा इम्पैक्ट हमें नजर आया. पेलिस्ट्री खास तौर पे आई थिंक पेलिस्ट्री नीड्स दिस गेम, ही नीड्स टू स्टार्ट दिस गेम. सो आई थिंक दैट इज द नीड ऑफ द टाइम, और ये फॉर्मेशन होगी मेरा ख्याल है जिसके साथ हमें जाना चाहिए. 4-2-3-1 आई थिंक सो. 4-3-3 डायमंड डिडंट सूट अस ऑन द वीकेंड, और मेरा ख्याल है कि मैकटोमनी को राइट पे खिला के कोई कोई वजह नहीं थी उसको खिलाने की, और वो कुछ इम्पैक्ट भी नहीं कर रहा था गेम में. So that was all about the lineup, and now we move on towards the prediction part. So as I said, I think a draw at Allianz Arena is a win for us at this stage. I know as a United fan you have to aim for a win, but as far as the head-to-head, the stats and everything, the Champions League records are on the line. तो मेरा ख्याल है कि हम 1-1 ड्रॉ करेंगे, and at least the team should show some fight, some spirit, एंड भाई ये दिखाना है कि भाई हम भी खेलने आए हैं, हम भी चैंपियंस लीग का हिस्सा हैं, हम कोई मजाक नहीं है. तो बस ये अगर आप दिखा दें तो मेरा ख्याल है कि फैंस वुड बी मोर देन हैप्पी. बायर्न म्यूनिक इज नो, they are the favorites for this competition, one of the favorites I would say, along with Manchester City. So you have to show them that what you are made up of. और यही था मेरा ख्याल है प्रीव्यू. और आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में what are your predictions, what are your suggestions, what do you expect of this match. और हम मिलते हैं मैच के बाद. तब तक चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना तो आप वो प्लीज कर दें, क्योंकि आपका यही सपोर्ट है जो कि हमें वापस आने पे थोड़ा मजबूर कर देता है कि हम थोड़ा और कंटेंट बनाएं, और वीडियोस बनाएं, और अपने फेवरेट क्लब को थोड़ा सपोर्ट करें. सो इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब, यू शुड सब्सक्राइब टू द चैनल. लाइक करना मत भूलिएगा. अब आप आ ही गए हैं